Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the leukocytes and its classification. So let's move to the classwork. So dear students, in the previous lectures we have discussed plasma and the blood cells and cell-like bodies. तो इसमें previous lecture के अंदर हमने एरिथ्रोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स को डिस्कस कर लिया था. अच्छा, थ्रोम्बोसाइट से रिलेटेड एक और बात याद रखिएगा, उसको मार्क कर लें, बुक के अंदर लिखा भी हुआ है तो उसके प्लेटलेट्स में कि दे हैव नो न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, प्लेटलेट्स की बात हो रही है, ठीक है, और ना ही इनके अंदर कोई पिगमेंट होती है. लेकिन आरबीसीज उनके अंदर तो एक प्रोमिनेंट पिगमेंट है रेड कलर की, जो आपको पता ही उसका, दैट इज़ हीमोग्लोबिन. सो आज का जो लेक्चर हमारा है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स. ठीक है, so leukocytes are the white blood cells or WBCs. Or the immune force, basically the immune force of the human body. So that is the leukocytes. तो पहली तो बात ये स्टूडेंट्स ल्यूकोसाइट्स के हवाले से, ल्यूको का मतलब ही कलरलेस है. याद आया आपको ल्यूकोप्लास्ट? ठीक है, प्लास्टिड्स में चैप्टर नंबर 4, तो उसमें हमने प्लास्टिड्स की टाइप्स पढ़ी थी, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. तो वहाँ पर भी हमने बात की ल्यूको का मतलब कलरलेस होता है. तो इसी तरह से ल्यूकोसाइट्स, ल्यूको का मतलब कलरलेस एंड साइट मीन सेल्स. सो ये ऐसे सेल्स हैं विच आर दे आर कलरलेस. तो ये पहली प्रॉपर्टीज़ की याद रखें इनकी, they are colorless. जहाँ तक बात करें इनकी काउंट की, काउंट मतलब कि तादाद की, जैसे कि हमने पढ़ा था आरबीसीज की, मेल्स के अंदर कितने 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, और फीमेल्स के अंदर 4 to 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर. और थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स दे वर 250,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर. क्लियर? इसी तरह से आप वाइट ब्लड सेल्स की बात करेंगे तो इनकी जो काउंट है दैट इज 7,000 to 8,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर. क्लियर? जहां तक बात करें इनकी लाइफ स्पैन की, तो डियर स्टूडेंट इनका लाइफ स्पैन बहुत है. इनका लाइफ स्पैन बहुत है मीन्स the lifespan ranges from months, महीनों से लेकर सालों तक, from months to years. Clear? तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन वाइट ब्लड सेल्स के हवाले से. अब डियर स्टूडेंट्स हम इनको क्लासीफाई करते हैं 3 बेसिस के ऊपर. क्लियर? द वाइट ब्लड सेल्स दे आर क्लासिफाइड ऑन 3 बेसिस. On the basis of nucleus, शेप, न्यूक्लियस की शेप के बिहाफ के ऊपर, प्लस डेंसिटी ऑफ ग्रेन्यूल्स,
and presence or absence of granules, और इसके अलावा नंबर 3 दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर साइटोप्लाज्म कि क्या वो क्लियर है या कि उसके अंदर ग्रेन्यूल्स हैं. अगर ग्रेन्यूल्स हैं तो उनकी डेंसिटी किस तरह से है. एंड देयर शेप, एक तो न्यूक्लियस की शेप, एक सेल की शेप जनरलाइज्ड. सो इस तरह से हम इनको क्लासीफाई करते होते हैं. सो जो मेन क्लासिफिकेशन है इसकी वाइट ब्लड सेल्स की, दैट इज दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. इसके 2 कंपोनेंट्स हैं वाइट ब्लड सेल्स के. Number 1 are the granulocytes. And number 2 are the agranulocytes. The basic difference is that they have granular cytoplasm and agranulocytes, they have clear cytoplasm. Clear cytoplasm means no granules. इसी वजह से A means absent, agranulocytes. Clear? Our students, granulocytes further divided on the basis of nucleus shape, density of granules and shape of the cell. इसको हम मजीद 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. Number 1 are the neutrophils. Neutrophils. So neutrophils, if we talk about their shape, so how do they look like? So this is how the neutrophils look like. If we talk about their size, they are twice the size of RBCs. RBCs का जितना साइज है इनका उससे डबल साइज है. ठीक है. और RBCs का कितना साइज है डियर स्टूडेंट्स? 8 माइक्रोमीटर्स. क्लियर? या 8 माइक्रोन्स भी कहते हैं उसको. सो दैट इज द साइज. नाउ द न्यूक्लियस is is 2 to 5 lobed. इसके न्यूक्लियस के 2 से 5 लोब्स होते हैं. ये देखिए 1 2 3, यहाँ पर 3 दिखाए गए हैं. तो कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोब्स होंगे इसके न्यूक्लियस के. ये इसका न्यूक्लियस है. क्लियर? ये इसका साइटोप्लाज्म है. दिस इज अ न्यूट्रोफिल. एंड
their percentage in white blood cells, so they are maximum. They are 62% of white blood cells. Clear? And number 4 is their function. If we talk about their function, they are involved in the phagocytosis of small particles. Clear? So that is the information regarding neutrophils. ये चीज़ बस याद रखिएगा MCQs के लिए कि टोटल वाइट ब्लड सेल्स का कितने हैं, ये 62% है, यानी 7 से 8 हज़ार का ये 62% मेजर कंट्रीब्यूशन इन्हीं का है, और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी है among the white blood cells. Now the second one is eosinophils. So second type of granulocyte. That is its shape. If we talk about the size, so they are also twice the size of RBCs. Okay? And if we talk about their nucleus, तो यहाँ पर कैसा न्यूक्लियस नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज बाइलोब्ड. दे हैव द न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड. बाय का मतलब टू, बाइलोब्ड. क्लियर? एंड इफ यू टॉक अबाउट देयर परसेंटेज among the white blood cells, so they are 2%. They are 2% of WBCs. 2%, clear? And its function, so its function is they produce substances that inactivates inflammation. यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे प्रोडक्ट्स रिलीज करेंगे eosinophils के जो कि इन्फ्लेमेशन को रोक देंगे, उसको इनएक्टिव कर देंगे. एंड दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड दे टू किल पैरासाइट्स. ये पैरासाइट्स को किल करने में भी इन्हीं का रोल है. Okay? So that is its function. Now the third category of granulocytes is
the basophils. So basophils, how do they look like? So this is how they look like. So talking about their size, again, they are twice the size of RBCs. Clear? And if we talk about their nucleus, as you can see, न्यूक्लियस की शेप के साथ है बाइलोब्ड है, दो लोब्स हैं, लेकिन ये भी बाइलोब्ड है तो ये भी बाइलोब्ड है। यहाँ पर ये वो हेडफोन टाइप यानी कि अपेयरेंस आती है इसके लोब्स की, और यहाँ पर हॉर्स शू की तरह, सो हॉर्स शू देखा ना, घोड़े के हॉर्स के नीचे उसके जो से हूफ्स होते हैं उसके नीचे लगा होता है, हॉर्स शू से कहते हैं, उसी तरह से। सो द न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड, मतलब कि दो ही लोब्स हैं इसके भी। If we talk about the percentage in the white blood cells, so they are less than 1% of WBCs. Less than 1%. ये MCQ के लिए आपने याद रखना है, ठीक है? इसलिए इसको मैं अलग से मार्क भी कर रहा हूँ साथ साथ। And if we talk about the functions, so as far as functions are concerned, they are very important. They release two kind of chemicals. ये दो chemicals release करते हैं। एक तो हिस्टामीन, आपको याद है कहाँ पढ़ाया था मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स? इन एस्थमा, याद आपको? तो वहाँ पर मैंने बताया था कि हिस्टामीन रिलीज होती है जो जब एस्थमेटिक अटैक होता है। सो वो कहाँ से रिलीज होती है? बेसोफिल से। सो हिस्टामीन इट कॉजेस इन्फ्लेमेशन, ये इन्फ्लेमेशन कॉज करेगी, इन्फ्लेमेशन in response to infections, जब कोई infection हो, yeah, and or allergic reactions, during allergic reactions, तब भी जैसे कि एस्थमा की बात हुई थी उसमें रिलीज होते हैं। और दूसरा एक केमिकल रिलीज होता है इनमें से बेसोफिल में से, दैट इज हेपारिन। और डियर स्टूडेंट्स, हेपारिन इट प्रिवेंट्स द ब्लड क्लॉटिंग, इट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको चोट लगी, जख्म हो गया तो ये प्रिवेंट करेंगे। एक्चुअली ये ब्लड वेसल के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते, ठीक है? वहाँ पर क्लॉट नहीं बनने देते, यानी कि एंटी कोगुलेंट के तौर पर भी ये एक्ट कर रहे होते हैं। अगर कोई इंजरी वगैरह हो जाए तो वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन को रोक देंगे, हेपारिन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द ए ग्रेनुलोसाइट्स, मीन द क्लियर साइटोप्लाज्म सेल्स, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। Number one, the monocytes,
So dear students, the monocytes, how do they look like? They look like this. और ये आप देख सकते हैं इनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल नहीं है, जैसे कि इन तीनों के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे थे। तो ये एक ग्रेनुलोसाइट्स हैं। If we talk about the size, that is much more important. इसके ऊपर MCQ के लिए मार्क करें। एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये अहम MCQ है। They are 2 to 3 times larger than RBCs. क्लियर? ये सारे ट्वाइस थे, डबल थे उसके साइज से, लेकिन ये 3 गुना तक बड़ा। इस वजह से वाइट ब्लड सेल्स में डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये सबसे बड़ा सेल है। ये MCQ के लिए मार्क करें, एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल या फिर लार्जेस्ट सेल इन द ब्लड। तो लार्जेस्ट साइज के एतबार से वो मोनोसाइट्स होते हैं, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आप देख सकते हैं, सो इट इज बाइलोब्ड। The nucleus is bilobed, 2 lobes हैं इसके, लेकिन साइटोप्लाज्म क्या है वो क्लियर है। If you talk about the percentage among the white blood cells, they are 3% of white blood cells. वाइट ब्लड सेल्स का 3% है ये टोटल MCQs के लिए। एंड व्हाट इज देयर फंक्शन मैं डिस्कस करता हूँ। अब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर फॉर्मेशन दे रिमेन for 10 to 20 hours in blood, then enter tissues, ये tissues में enter हो जाते हैं, and coils and unite to form macrophages. Macro means big, phage means eater. Clear? और फिर ये macrophage क्या करते हैं? So they are involved in phagocytosis of large particles. जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस, एनीथिंग, तो उनको फैगोसाइटोसिस, उनको इनगल्फ करने के लिए। अब डिफरेंस याद रखिएगा, न्यूट्रोफिल्स भी फैगोसाइटोसिस कर रहे हैं, लेकिन वो किसकी फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व हैं? स्मॉल पार्टिकल्स। और जबकि मोनोसाइट्स ये मैक्रोफेज बना के क्या करते हैं? लार्ज पार्टिकल्स जो है उसको फैगोसाइटोस करते हैं। क्लियर? Now, the second category is of lymphocytes. So, lymphocytes, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो ऑलमोस्ट फिल कर देता है साइटोप्लाज्म को, almost fills the cytoplasm. अच्छा, मोनोसाइट्स का जो न्यूक्लियस है ये राउंड भी हो सकता है, ठीक है, राउंड टू बाइलोब्ड एंड राउंड, ये दोनों बातें याद रखिए। सो इफ यू टॉक अबाउट द साइज, इनका जो साइज है
that is they are slightly larger than RBCs, थोड़ा सा बड़ा साइज है, डबल नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट्स में डियर स्टूडेंट्स सबसे छोटे सेल ये लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। एंड न्यूक्लियस it nearly fills the cytoplasm and is round usually. Here, if we talk about the percentage among the white blood cells, so they are 32% of WBCs. इसको हम इसी को इसके लिए मार्क कर लें। And as far as their function, तो फंक्शन डिटेल के साथ डिस्कस करना है आगे चलकर चैप्टर में, इम्यूनिटी वाले टॉपिक में, लिम्फेटिक सिस्टम वाले टॉपिक में। सो फंक्शन इज, अब इसमें चूंकि दो से तीन मेजर कैटेगरीज हैं जो हमने प्रीवियस डिवाइड भी किया था, दो मेजर हैं इसमें, वो तो उनके फंक्शंस के एतबार से बात कर लेते हैं। लाइक द टी सेल्स and B cells. B cells जो होती हैं they produce plasma clone cells. Plasma clone cells, और plasma clone cells क्या करवाएंगे? They will form antibodies. जबकि T lymphocytes होते हैं ये फर्दर आके दो तीन कैटेगरीज के हैं, जिसमें मेजर जो है वो T हेल्पर, ये मेन मास्टर की है हमारे पूरे इम्यून सिस्टम की। फिर इसी तरह से टी साइटोटॉक्सिक, याद आ गया आपको, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको क्लासिफाई किया था। और फिर टी डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, इस तरह से इसको हम कैटेगराइज करते हैं। यानी कि बेसिकली इनका जो रोल है दैट इज इन द इम्यूनिटी, बेसिक फंक्शन इज इम्यूनिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, लिम्फोसाइट्स बेसिक रोल इज इन द इम्यूनिटी। यहाँ पर हमने बात की एक तो मैक्रोफेजिस की और दूसरा बात की यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स की, इनका मिलता जुलता फंक्शन है। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैक्रोफेजिस और न्यूट्रोफिल्स, द मैक्रोफेजिस एंड न्यूट्रोफिल्स, चूंकि उन्होंने फैगोसाइटोसिस करनी है, फैगोसाइटोसिस, चूंकि फैगोसाइटोसिस इनका काम है, तो डियर स्टूडेंट्स कौन से ऑर्गेनेल इनमें ज़्यादा होंगे? जी यस, द लाइजोसोम्स, क्लियर। सो इनमें लाइजोसोम्स बहुत ज़्यादा होंगे, मैक्रोफेजिस के अंदर भी और न्यूट्रोफिल्स के अंदर भी। सो चूंकि इन्होंने फैगोसाइटोसिस करनी है, दे फीड ऑन द फॉरेन इन्वेडर्स, किसी भी तरह का फॉरेन इन्वेडर है, ठीक है, उसके साथ, एंड इवन द कैंसर सेल्स, ये अहम बात, जो कैंसर सेल्स हैं उनको भी खा जाते हैं मैक्रोफेजिस। ये बहुत अहम बात डियर स्टूडेंट्स, इसको मार्क कर लें कि मैक्रोफेजिस और न्यूट्रोफिल्स ये कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, अगर बॉडी के अंदर बन रहे हों तो। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे डाई, मतलब कि मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल की बात हो रही है, दे डाई एंड फॉर्म अ white material called, उस white material को कहते हैं, ये स्टूडेंट्स आपको पता है, that is called pus। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अहम है, इसको मार्क कर लीजिए, व्हाट इज पस। तो जब भी कभी बैक्टीरियल इन्वेजन होता है या वायरल इन्वेजन होता है या कोई पैरासाइट आता है बॉडी के अंदर, तो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स उसको मारने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर मार धाड़ होती है, वहाँ पर बैटल होती है, और इसी बैटल के दौरान, इसी मार धाड़ के दौरान मैक्रोफेजेस भी मारे जाते हैं कुछ, और कुछ न्यूट्रोफिल्स मारे जाते हैं। तो इनकी वजह, इनके डेड होने की वजह से वहाँ पर एक वाइट कलर का मटेरियल बनेगा, उस वाइट मटेरियल को कहेंगे पस।
तो पस याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इट कंटेन्स डेड वाइट ब्लड सेल्स, क्लियर, एंड समटाइम्स द पैथोजेंस ऑल्सो, क्लियर। इसमें पैथोजेंस भी होते हैं, मरे हुए और मरे हुए आरबीसीज। आमतौर पर जहाँ पर जख्म होता है वहाँ पर ये वाइट कलर का वो मटेरियल, पीप, उर्दू में इसको पीप बोलते हैं, रेशा जिसे कहा जाता है, ये बन जाता है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।